Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing well. Today is 11th June 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. Today our topic is caste. As you know, in the earlier class we read about social stratification, which means division of society into groups or segments, wherein one group is considered as superior and the other group is considered as inferior, or we can say it is simply division of society into groups or segments of higher and lower ranks. One group has higher rank and the other group has lower rank. There are different forms of this social stratification, and one of the forms of social stratification is caste. Caste is the social stratification based on the birth of the individual. The term caste is derived from the Spanish word casta, meaning breed or lineage. The word caste also signifies race or kind. The Sanskrit word for caste is varna, which means color. Caste is a system of stratification in which mobility up and down the stats ladder based on birth. So let us first try to understand the meaning of this term caste. Basically, this word caste, this term caste, has been derived from a Spanish word casta, which means breed, which means this lineage, and it also means race or kind. कास्ट जो टर्म है, जो लफ्ज़ है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो रूट है, जो जड़ हम कह सकते हैं, तो इसको स्पेनिश वर्ड कास्टा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रीड, नस्ल, लीनिएज बोलते हैं, ख़ानदान। इसी तरह हम इसका जो माने एज काइंड भी ले सकते हैं, किस्म, और रेस, नस्ल। तो ये जो लफ्ज़ है कास्ट, ये एक स्पेनिश वर्ड कास्टा का मतलब कास्टा से लिया गया है, तो जिसका मतलब होता है नस्ल या ख़ानदान। और अगर हम हिंदुस्तान या इंडियन सोसाइटी, हिंदू समाज, हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी समाज की बात करें, तो दिस वर्ड वाज एक्चुअली applied by the Turkey and this Portuguese, because you know before independence India was ruled by Britishers, and some of these states were ruled by the Portugal, or we can say Portuguese. So because in Hindu society or Indian society there exists a term जाति, क्योंकि अगर हम उर्दू या हिंदी में इसका तर्जुमा करें तो कास्ट का मतलब होता है ज़ात, तो हिंदी में इसको जाति भी बोलते हैं. सो द पोर्तुगीज applied this term caste for that jati system. Caste is the social stratification based on the birth of the individual. So as I earlier told, there are different forms of social stratification. One of the forms of social stratification is caste. It is that system of social stratification, it is that form of social stratification which is based on the birth of an individual. For example, you must have learnt about these different varnas of in Hindu society. Brahmanas, we have Kshatriyas, Vaishyas, and we have Shudras. It is because these varnas are based on the birth of an individual. For example, we can see that in a society, a group has some sort of particular, some specific position, status. It is because he belongs to a group, and his this status or position is determined by his birth, by the birth
of the individual into a particular group. तो इसका मतलब होता है कि ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या समाजी तकसीम कारी के एक किस्म है जिसमें जो बुनियाद होती है स्ट्रेटिफिकेशन की वो एक इंसान की पैदाइश होती है। एक समाज के अंदर जब मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं, एक इंसान किसी ख़ास ग्रुप में पैदा होता है, किसी ख़ास डायनेस्टी में पैदा होता है, तो उस पैदाइश की वजह से वो एक ख़ास ग्रुप में, एक ख़ास किसी, हम कह सकते हैं कि एक ख़ानदान में पैदा हुआ है, तो उस पैदाइश की वजह से समाज के अंदर उसका रुतबा होता है, उसकी पोजीशन होती है। अगर समाज के अंदर उस ग्रुप को या उस हम कह सकते हैं उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नीचा तबका समझा जाता है, तो उस शख्स का भी वो मतलब जो स्टेटस होगा वो समाज के अंदर कम होगा। इसी तरह अगर उस ग्रुप जिस ग्रुप में वो पैदा होता है उसका समाज में ज़्यादा असर मतलब रसूख है, उसकी रैंक हायर है, उसको दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है, आला समझा जाता है, तो उसी हिसाब से उस इंसान की भी जो उस ग्रुप में पैदा हुआ, जो उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में पैदा हुआ, तो उसी हिसाब से उसका भी स्टेटस, उसका जो वक़ार, उसकी हैसियत और उसका मर्तबा समाज के अंदर होगा। The Sanskrit word for caste is varna, which means color. In Sanskrit, this caste word means varna, or we can say because this Sanskrit is the, we can say, language of the scriptures of Hindu religion. So in it there exists a term varna, which is substituted for this caste. So but in Sanskrit this varna means color. In English, when we translate this Sanskrit word varna, it translates to color. This is one of the forms of stratification, and in this form of stratification an individual is identified by his birth into a particular group. Caste is a system of stratification in which mobility up and down the status ladder is based on birth. Now, because this stratification is based on the birth of an individual, so his birth, the birth of an individual, defines his social position and status in the society. If he belongs to a group which has higher rank in the society, this individual automatically enjoys those privileges, that prestige, that position, that rank in the society. Mobility means free movement up and down the status ladder. चूँकि समाज के अंदर जो मुख्तलिफ तबकात पाए जाते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा ये, तो एक तबके को ज़्यादा रैंक, हायर रैंक पे देखा जाता है, दूसरा जो तबका होता है उसको कम तर समझा जाता है। तो ये लैडर होती है, एक तरह की सीढ़ी होती है। कोई इस सीढ़ी के ऊपर जो सबसे पायदान पहला वाला होता है ऊपर, तो उसका मर्तबा सबसे ज़्यादा होता है, उसका रुतबा ज़्यादा होता है, उसकी पोजीशन ज़्यादा होती है, उसकी रैंक ज़्यादा होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे 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 जो पायदान आते हैं, जो लास्ट वाला जो पायदान होगा इस सीढ़ी का, तो वो सबसे लोअर रैंक में आता होगा। तो वो सबसे लोअर रैंक में उसकी जो रैंक है वो सबसे नीचे वाली है, तो उसको कम तर समझा जाता है, उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस भी बाकी जो ग्रुप्स हैं जो उसके ऊपर आते हैं उनसे कम समझा जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, नटशल में अगर हम कहें, कास्ट एक किस्म की जो समाजी तकसीम कारी है, एक किस्म की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, एक किस्म का डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, जो डिवीजन बेस्ड होता है बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल की जो बर्थ होती है, जो पैदाइश होती है, वो किस ग्रुप में होगी, उसी हिसाब से उसका भी मर्तबा पोजीशन समाज के अंदर होता है। Now the origins of this caste system, because you know that this form of stratification is predominant in Indian society, or we can say Hindu society.
کیونکہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے یہ دنیا کے اندر خاص کر ہندوستان کے اندر ہندو سماج کے اندر ایک سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیشل فیچر ہے ان کی سوسائٹی کا، ان کی سماج کا. مطلب کہ جو کاسٹزم ہے، کاسٹ سسٹم ہے، یہ صرف ہندوستان میں ہندو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے خاص کر. تو اب یہاں پر اس کی تھیوریز ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، کہ کیسے یہ کاسٹزم، کیسے یہ کاسٹ، یہ سسٹم وجود میں آ گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو کہاں سے اس کا وجود عمل میں آیا. تو اس کے لیے بہت سارے جو تھیوریز یہاں پر مختلف سوشالوجسٹس نے دی ہیں، جو نظریے پیش کیے ہیں، اوریجن آف دس کاسٹ اور کاسٹ سسٹم. تو ان میں سے ایک فرسٹ تھیوری ہے ریشیل تھیوری. دس تھیوری از فلی بیسڈ آن دا اینشنٹ انڈین لٹریچر. According to Hindu tradition, the origin of caste system generally comes from the four original varnas, namely Brahma, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Racial theory says Brahma is teacher and the priest and arises from head of Lord. Kshatriya is warrior and arises from the shoulder of Lord. Vaishya is common people, arises from the hip of Lord. Shudra is the domestic servant, arises from the foot of Lord. So first theory is that racial theory. This theory is fully based on the ancient Indian literature, because this, if you read the ancient Indian literature or if you read the Vedas, there exists a term varna, and according to these to this ancient Indian literature, the Hindu society has been divided into four varnas. Varnas means color. We can say the four castes. The first caste is Brahman, the second is Kshatriya, the third is Vaishya, and the fourth is Shudra. These are the four castes, the four varnas that we know exist in the ancient Indian literature. So accordingly, the Hindu society, the Indian society has been divided according to the ancient Indian literature. The Hindu society has been divided into these four varnas or castes. The first is Brahma is teacher and the priest and arises from head to Lord. The first caste, the first varna is Brahma, and it is said that Brahma is a teacher, or we can say preacher, which means that the duty of this caste, the persons belonging to this caste, is to preach about religion. And the ancient Indian literature says that because this caste evolved from the Brahma's head, or we can say head of the Lord. تو اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا جو قدیمی جو لٹریچر ادب ہے جیسے ویداس ہیں، تو ان میں یہ ریشل تھیوری جو پائی جاتی ہے، مطلب ہندو سماج کو مختلف طبقوں میں بانٹا گیا ہے نسل کے اعتبار سے. تو وہاں پر ان کے الگ الگ کاسٹ بھی بتائی گئی ہیں، اور کون سی کاسٹ ہائی رینک والے ہے، کون سی کاسٹ لوور رینک والے ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے. اب چونکہ جو چار کاسٹس ہیں، برہما، کشتریاز، ویشیاز اور شودراز، اب ان چاروں کاسٹس جو ہیں، ان کا جو سماج کے اندر جو سٹیٹس لیڈر ہے، جو ابھی میں نے بولا آپ کو کہ جو سٹیٹس لیڈر سماج کے اندر جو کس گروپ کو، کوئی کس کاسٹ کو، کس سیگمنٹ کو سماج میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر سب سے نیچے کون سا آتا ہے. تو اس طرح یہ جو کاسٹ سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے انٹو ہائر رینکس اینڈ لوور رینکس. جو فرسٹ کاسٹ ہے برہما، تو ویداس کے مطابق یا ان جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو لٹریچر ان کا ہے، ان کی جو اسکرپچرس ہیں، تو ان کے مطابق جو برہما ہے، اس کی پیدائش لارڈ جس کو یہ کہتے ہیں، برہما مینس کہ جس کو اپنا خدا تصور کرتے ہیں، تو اس کے جو
हेड है उससे उसका वजूद अमल में आया है, उसकी पैदाइश उसके जो हेड से हुई है ब्रह्मा की। तो उसका मतलब वो समझते हैं क्योंकि जो हेड है ये बॉडी के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो इसका मतलब जो स्टेट्स लीडर होगा उसमें ब्रह्मा सबसे टॉप पर होगा। और उसका काम क्या होगा, क्योंकि उसका काम होगा रिलीजन, जो मजहबी तालीम है उनका प्रचार करना, या जो भी रिलीजियस जो सेरेमनीज होंगे उनमें हिस्सा लेना, और जो भी मजहबी अमूर जो होंगे वो ब्रह्मा जो कास्ट है इसके हिस्से में आएंगे और उनकी जिम्मेदारी इसकी होगी। नाउ सेकंड इज क्षेत्रिय इज ए वेरियर एंड अराइज फ्रॉम द शोल्डर ऑफ लॉर्ड। दूसरा उसके बाद जो तबका आता है वो है क्षेत्रिय। क्षेत्रिय का काम है मतलब कि उनको जो फौज जो है तो उनको इस जुमरे में रखा जाता है, जो वेजियर्स हैं, सिपाही हैं। तो चूँकि उनके मुताबिक उसकी जो पैदाइश है, उसका जो वजूद है वो लॉर्ड के शोल्डर से आया है। तो इसका मतलब होता है सिट्रंगत। तो जिनके पास सिट्रंगत होती है उनको इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में रखा गया है जो क्षेत्रीय से। तो उनका काम क्या है, समाज की जो रक्षा करना, मतलब जो फौज होता है, सिपाही होते हैं, वो सब इसी जो ग्रुप है, इसी जो कास्ट है, इसी में क्षेत्रीय में उनको तस्वर किया जाता है। नेक्स्ट इज वैश्य इज कॉमन पीपल अराइज फ्रॉम द हिप ऑफ लॉर्ड। उसके नीचे जो अब तबका आता है वैश्यास का, और उनके मुताबिक उसकी पैदाइश हिप ऑफ द लॉर्ड, जो लॉर्ड का हिप है, ये कोहला ना, थाई के ऊपर जो होता है ना यहाँ पे, तो इसको हिप बोलते हैं। तो इसका ये आम इन लोग हैं। तो जो आम जो मतलब इस हिंदू समाज के अंदर जो लोग हैं, जो ब्राह्मणस और जो क्षत्रिय के बाद जो लोग आते हैं, उनका एक ग्रुप अलग बनाया गया है जिनको नाम दिया गया वैश्यास। तो ये आम लोग हैं और इनके बारे में बताया गया है कि इनकी पैदाइश हिप ऑफ द लॉर्ड से हुई है। और इनका काम क्या होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, मतलब जो तिजारत का काम करते हैं, तो उन लोगों को इस ग्रुप में, इस कास्ट में रखा गया। और सबसे जो निचला तबका है, लास्ट जो इस टैक्स लेटर पे जो लास्ट पायदान है, उसके मुताबिक वो शूद्रास हैं। तो शूद्रास कौन से हैं, शूद्रा इज द डोमेस्टिक सर्वेंट्स राइज फ्रॉम द फुट ऑफ लॉर्ड। तो लास्ट पे उन लोगों को रखा गया है जिनको नाम दिया गया शूद्रास, क्योंकि उनके मुताबिक जो शूद्रास है उनकी जो पैदाइश है वो लॉर्ड के फुट से हुई है, पाँव से हुई है। तो जो लोग खिदमत करने के लिए बनाए गए हैं उनको शूद्रास बोलते हैं ये। तो उनका काम है लोगों की खिदमत करना, मतलब स्कैवेंजिंग, गली कूचे साफ करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो मीनियल जॉब्स होते हैं, ऐसे ऐसे काम जिन्हें लोग हम छोटे काम समझते हैं, जैसे गली कूचे साफ करना, तो या हम कह सकते हैं कुछ और भी काम हैं जो मीनियल समझे जाते हैं। तो उनका काम है कि वो लोगों की खिदमत करें। तो चूँकि उनका जो वजूद है, उनकी जो पैदाइश हुई है वो लॉर्ड के फुट से हुई है, मीन्स पैरों से हुई है। तो उनकी जगह पैरों में ही है। इसका मतलब है कि स्टेट्स लेडर में जो ब्राह्मण है वो ऊपर है, और लास्ट में जो निचले जो सेटअप पर है वो है शूद्रास। तो ये एक थ्योरी है, एक नजरिया। दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ब्राह्मण्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कास्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्व्स ऑन द हाईएस्ट लेडर ऑफ सोशल हायरार्की। तो एक रेशियल थ्योरी है, उसका जो हमने पढ़ा उसके बारे में, वो उनके स्क्रिप्चर्स में, इनके एंशिएंट जो लिटरेचर है उसमें पाया जाता है। तो उस हिसाब से फिर क्योंकि उन्होंने उसी पर अमल करना वहाँ पर शुरू किया, और उस हिसाब से क्योंकि वहाँ पर लिखा गया था कि ब्रह्मा सबसे ऊपर वाला स्टेप पे होगा, उसकी रैंक सबसे ऊंची होगी, और शूद्र जो है उसकी रैंक सबसे नीची होगी। तो उसी हिसाब से हिंदू समाज फिर काम मतलब उनका चला। तो उन वर्णास का, उन कास्ट्स को इस हिसाब से बांटा गया। तो दूसरी थ्योरी के मुताबिक, जिसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मणस है, द ब्राह्मणस वर मेनली रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कास्ट सिस्टम। द ब्राह्मणस वर रेस्पॉन्सिबल to create the caste system because Brahmins were on the higher rank. They enjoyed the superiority. They enjoyed
these prestige, they enjoyed higher positions, so they are responsible for creating this caste system because they wanted to top this status ladder, they wanted to be on the top of this hierarchy, they wanted to be on the higher rank, so they devised the caste system for their own benefit. तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में बताया गया है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये ब्राह्मण्स ने खुद इजाद किया, क्योंकि वो स्टेटस लेडर पे सबसे ऊंचे दर्जे पे थे, उनकी रैंक सबसे हायर थी, तो उन्होंने सोचा कि हम हमेशा के लिए सब कास्ट से ज़्यादा मतलब मर्तबा रखते हैं, हमारी रैंक सबसे हायर होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कास्ट सिस्टम बनाया कि इन लोगों को ऐसे बांटो, एक ग्रुप को एक मतलब ऐसे लोगों को इस ग्रुप में रखो जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं उनको वेश्याज में रखो, जो मतलब मीनियल जॉब्स करते हैं उनको शूद्रास में रखो, ताकि हमारी जो पोजीशन है वो हमेशा के लिए सबसे टॉप पर रहे। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थ्योरी। Nesfield is founder of this theory. According to him, caste system is the natural product of the occupational division of Hindu society. He said that function and occupation alone is responsible for the origin of caste system. Next, this theory is occupational theory. This theory has been propounded by this, we can say, Nesfield. According to him, caste system is the natural product of the occupational. In this theory, Nesfield says that this caste system is basically on the occupation. कि लोग कौन सा काम करते हैं तो उसी हिसाब से उनको तकसीम किया मुख्तलिफ तबकात में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कहना है कि जैसे ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बिगिनिंग से ही शुरुआत से ही मजहबी उमूर के जो काम होते हैं, जैसे मजहबी रसूम, मजहबी जो मतलब प्रचार होता है, तो मतलब मजहबी किताबों का ज्ञान होना, उनकी नॉलेज होना, तो चूँकि वो स्टार्टिंग से ऐसे ही इसी काम में थे, तो उस हिसाब से जो शूद्राज थे वो छोटे छोटे काम करते थे, इसलिए उनको उसी ग्रुप में रखा गया निचले तबके में। और कुछ लोग थे जो मतलब हम कह सकते हैं फौजी थे, वॉरियर्स थे, तो फिर उनको क्षेत्रीय ग्रुप में रखा गया। इसलिए कुछ इंसान थे, कुछ लोग थे जो तिजारत करते थे, छोटे छोटे दुकान चलाते थे, छोटे छोटे क्राफ्टर्स मतलब जो हैंडी क्राफ्टर्स बनाते थे, तो उनको अपने काम के मुताबिक एक ग्रुप में रखा गया। तो अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड इसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम इसलिए वजूद में आया कि लोगों को उनके काम के एतबार से, जो पेशा था, तो पेशे के एतबार से उनको बांटा गया, पेशे के एतबार से उनके तबकात बनाए गए, उनके ग्रुप्स बनाए गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्यूपेशनल, दिस नोन एज ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ही सेड दैट फंक्शन एंड ऑक्यूपेशन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। उसके मुताबिक जो कास्ट सिस्टम है इसके लिए सबसे बड़ी जो वजूहत है वो है ऑक्यूपेशन, कि एक समाज के अंदर चूँकि मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो कुछ लोग एक काम करते हैं, कुछ लोग दूसरा काम करते हैं, तो समाज के अंदर जब लोगों ने देखा कि कुछ लोग जो रिलीजन से वाबस्ता थे, मज़हब से वाबस्ता थे, तो उनको हायर रैंक पे रखा गया, जो छोटे छोटे काम करते थे उनको सबसे निचले तबके पर रखा गया। तो इसका कहने का मतलब है कि कास्ट सिस्टम वजूद में सिर्फ ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर आया, कि लोग मुख्तलिफ पेशा इख्तियार करते हैं, तो उस वजह से उनके ग्रुप्स भी बनाए गए और उनका पोजीशन स्टेट्स भी उसी हिसाब से मुतय्यन किया गया। तो ये थे कुछ इसमें जो थ्योरीज थे, जो ओरिजिन ऑफ दिस कास्ट सिस्टम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करैक्टरिस्टिक्स और नेचर देखेंगे, और साथ साथ हम